welcome to my YouTube channel. My name is Akshay Kurhekar. So, this is our continued video of cryptography series, cryptography in blockchain. हमने पहले दो वीडियोस देख चुके क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स देखा था, दूसरा था सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी and techniques, and third and this is one is the final video which is asymmetric key cryptography and hashing. So let's get started. But yeah, एक चीज आपको मुझे बतानी है बिफोर गेटिंग स्टार्टेड. Let me show you quickly. So here we have a dev community profile on my name. So इस particular dev community में I have posted multiple blogs. You can check it out. The blogs contains about little knowledge of JavaScript, Hyperledger Fabric. You can read more on smart contract, Web3 evolution, what is the roadmap of blockchain development, what is blockchain technology, list of jobs available in blockchain 2023, how ERC tokens, what are the list of different ERC tokens, you can find it here. And the most important, we have a cryptography in blockchain series. So ये जो cryptography blockchain series है, इसके अलग अलग हर एक वीडियो में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो हर एक वीडियो में हमने पीपीटी यूज किया है. सो वो पीपीटी को मैंने इस पर्टिकुलर इसमें properly set here, so you can read it out here. So this is the first video, what is cryptography and iska workflow diagram. This is all the genuine content, you can check it out. तो सेम विद द सेकंड वीडियो का भी पीपीटी है इसमें, एंड द थर्ड वन जो कि आज हम देखने वाले हैं उसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से पीपीटी दिया है. लेट्स से यहाँ पे आज हम देखेंगे व्हाट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, देन उसके एग्जांपल्स देखेंगे, व्हाट इज आरएसए कैसे काम करता है, डीएसए क्या है, then you will see DSA workflow with proper flow diagram, then you will see hashing, most important concept in blockchain. What is hashing, what is their workflow, what are the applications of hashing, the types of hashings along with the SHA-256. Okay, so and last but not least we will see which particular algorithms of hashings using which blockchain. So let's get started. So हम फ्लो कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन, देन एक्सप्लेनेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो डायग्राम. So let's see what is asymmetric cryptography. Asymmetric cryptography is also known as public key cryptography. Is cryptographic system that uses pair of key to perform various security operations such as encryption, decryption, digital signature, and key exchanges. Unlike symmetric cryptography, where the same key is used for both encryption and decryption, asymmetric cryptography uses two different keys, but mathematically related keys. These both keys are related to the same key, but these are acting as a two different keys, public key and a private key. तो इसमें sorry for the slide change. So in this particular PPT, in this particular flow diagram, what exactly is happening? यहाँ पे सेंडर है. सेंडर हमेशा क्या करता है, एक प्लेन टेक्स्ट और प्लेन मैसेज सेंड करता है टू द रिसीवर. तो इस प्लेन मैसेज को सबसे पहले यूजिंग द प्राइवेट की which is very important in the whole flow. Private key and public key is associated with respect to the mathematical formula. Let's say usually we chooses two different prime numbers, large prime numbers, and then we collabed it together and we generated the private key, and along with that on using some exponential functions we generated public key. तो ये जब हम जनरेट कर लेते हैं, सो प्राइवेट की को यूज करके हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन कर रहे हैं. यहाँ पे एनक्रिप्शन कर दिया यहाँ पे. सो एनक्रिप्शन करने के बाद में व्हाट वी गेट, वी गॉट द साइपर टेक्स्ट. वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइपर टेक्स्ट, अ टेक्स्ट व्हिच इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल form, which is the changed, the ciphertext is the changed form of its data. Okay, or we can say it's simply encrypted data. ciphertext को जब वो रिसीवर एंड में जाएगा तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास में ऑलरेडी पहले से प्राइवेट की रहेगी, पब्लिक की रहेगी ऑफ द सेंडर, जो सेंडर ने पहले ही उसको सेंड करके रखी हो सकती है, या फिर उसने इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ में भी सेंड कर सकता है वो. एंड इट्स ओके टू शेयर द पब्लिक की बनी इसलिए कि वो जिसको भी वो मैसेज सेंड करना चाहता है वो रीड कर सके यूजिंग दिस पब्लिक की. सो पब्लिक की इस पर्टिकुलर साइपर टेक्स्ट पे अप्लाई करेगा, देन ओनली ही कैन एबल टू डिक्रिप्ट द मैसेज एंड the receiver can read the message. So this is all about decryption. So now let's get started.
So these are the examples of asymmetric cryptography, RSA, DSA, elliptic curve cryptography, Diffie-Hellman exchange method, TLS, SSLS protocols as well. So now let's have a look on RSA. RSA is the one of the oldest encryption methods, which is discovered by three scientists. And let's read the definition. इसकी definition देखते हैं. RSA algorithm is an asymmetric cryptographic algorithm. Asymmetric actually means it works on two different keys, public key and private key. As described, that public key is given to the everyone and private key is kept private, obviously. So now let's उसके steps देखते हैं. RSA के अंदर कौन कौन से steps involve होते हैं. सबसे पहले होता है generating public key. Generating public key size could be lies around 1024 बिट्स टू 2048 बिट्स. ठीक है. 10 1024 टू 2048 बिट्स लॉन्ग लेंथ उसकी हो सकती है. दिस इज द पब्लिक की साइज. एंड जनरेटिंग प्राइवेट की, सबसे पहले पब्लिक की जनरेट करता है, पब्लिक की जनरेट करने के बाद में प्राइवेट की जनरेट करता है और वाइस वर्सा. एंड देन एनक्रिप्टिंग डेटा विद प्राइवेट की, डिक्रिप्टिंग डेटा विद द पब्लिक की एंड चेकिंग द डेटा. नो, नॉट वाइस वर्सा एक्चुअली. सबसे पहले वो प्राइवेट की जनरेट करता है. we generate the private key, and using that private key we generate the public key, and then we send that public key to the sender. तो यहाँ पे एक फ्लो समझ में आ गया. जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था, एनक्रिप्ट होता है डेटा विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट की एंड देन डिक्रिप्ट द डेटा विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक की, देन चेकिंग द डेटा. अभी इसके बीच में कुछ एल्गोरिथम्स और होते हैं जो एनक्रिप्शन होता है. इन मींस इसके सब स्टेप होते हैं, सब स्टेप. जैसे एनक्रिप्शन के अंदर वो डायरेक्टली एनक्रिप्ट कैसे करता है, सेम की को मल्टीपल टाइम उसको डिवाइड करके उस पर्टिकुलर स्मॉल चंक ऑफ डेटा को राउंड वाइज एनक्रिप्ट करता है. ओके. सो एंड देन डिक्रिप्शन के टाइम पे भी राउंड वाइज उसको डिक्रिप्ट करता है टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द एल्गोरिथम. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन DSA. So DSA is nothing but the digital signature algorithm. Cryptography refers to the digital signature algorithm, which is widely used cryptographic algorithm for generating digital signatures. What is the digital signatures? वो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं. The DSA algorithm involves the use of private key to generate a digital signature for given message and corresponding public key to verify the authenticity and integrity of the signature. This is the important statement here. Corresponding public key is used to verify the authenticity and integrity of the signature. DSA relies on the mathematical properties of modular explanation and discrete algorithms to provide the security of the digital signatures. ये जो exponential होता है, let's say we have exponential and logarithmic functions, तो we use the exponentials mechanism to what we can say, to generate the public key or to verify the public key. To verify the digital signatures, we use the discrete logarithms as well as exponentials to provide security to the digital signatures. It has been widely adopted in various applications, including secure email communication, secure document signing, and certificate authorities. Now let's try to understand the DSA workflow. इसका workflow देखते हैं. वर्कफ्लो कुछ इस तरह से, मेरा एक सेंडर है. यहाँ पे सेंडर के पास में डेटा है, इट्स अ प्लेन डेटा और मैसेज वी कैन कॉल इट. उसने सबसे पहले हैश फंक्शन इंप्लीमेंट किया. यहाँ पे हैश फंक्शन इंप्लीमेंट करने के बाद में वो क्या जनरेट करेगा, डाइजेस्ट, और वी कैन कॉल इट एज अ हैश. डेटा को इसने हैश फंक्शन के अंदर पास किया, देन उसके बाद में एक हैश जनरेट हुआ है. ये जो हैश होता है ये फिक्स साइज का हैश होता है. ओके. फिक्स लेंथ ऑफ दी, लेट्स से मेरे पास में पहले यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रिंग थी, एक प्यारा था जिसके अंदर 100-200 वर्ड्स थे, तो उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू सिंपली 256 बिट्स और 128 बिट्स विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम. कौन सा हैशिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिक्स स्ट्रिंग आ गया. फिर फिक्स हैश साइज को, और वी कैन कॉल इट एज डाइजेस्ट को, हम क्या करते हैं, सिग्नेचर एल्गोरिथम में पास करते हैं अलॉन्ग विद द प्राइवेट की. इन दोनों को मिक्स करके फिर क्या बनता है, एक डेटा बनता है मेरा, जो मुझे रिसिपेंट को सेंड करना होता है, रिसीवर को सेंड करना होता है अलॉन्ग विद द सिग्नेचर. यहाँ पे एक सिग्नेचर भी बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट की. अब ये जो एनवलप बनता है मेरा डेटा प्लस सिग्नेचर का, उसको हम भेजते हैं फॉर द रिसीवर. रिसीवर सबसे पहले क्या करता है, उसको वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में भेजता है. वेरिफिकेशन एल्गोरिथम में वो पास करता है पब्लिक की पास करता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन एल्गोरिथम, एंड देन अगेन इट्स जनरेट दी हैश डाइजेस्ट. ये अपना पब्लिक की के हिसाब से एक हैश डाइजेस्ट जनरेट होता है.
एंड द सेम हैशिंग एल्गोरिदम और सेम एनवेलप को हैशिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू भी पास किया जाता है। और ये हैशिंग एल्गोरिदम और जो स्टार्टिंग में हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज किया था वो दोनों सेम रहते हैं। सो दे जनरेट द सेम हैश। ये वाला हैश जो है हैश डैश विच इज आई रिप्रेजेंट एट दी ऑरेंज कलर में जो मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे हैश हैश ये सेम होता है। और अभी आखिरी में क्या होता है, रिसीवर चेक करता है ये जो हैश उसको मिला वेरिफिकेशन एल्गोरिदम के थ्रू और ये हैश फंक्शन के थ्रू जो उसको हैश डाइजेस्ट मिल रहा है, अगर वो सेम रहा, अगर वो सेम रहा, इक्वल रहा, तो जो मेरा डेटा है वो वैलिड रहेगा। अगर वो चेंज हो गया इवन विद द सिंगल बाइट, इट मीन्स माई डेटा गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड और इट गेट मैनिपुलेटेड। सो दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मूला। सो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ऑथेंटिसिट कर रहे हैं हम डेटा को, ऑथेंटिसिट पता चल रहा है कि दिस पब्लिक की कि वो सेम ही सेंटर से आया है कि नहीं आया। और दूसरी चीज हम इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा चेक कर रहे हैं कि जो मेरा डेटा है वो एक्जैक्टली सेम है, मैनिपुलेट हुआ कि नहीं हुआ। Getting? So this is the importance of digital signature algorithm. Now let's move towards hashing. What is the hashing? Hashing is very interesting topic, and in most of the blockchain we using hashing only to do most of the cryptographic functions. Okay, so let's see. Hashing is cryptography refers to the process of transferring data input into fixed size string of characters output. Let's say जैसे मैंने बताया हैशिंग किस लिए यूज करते हैं, जो इनपुट डेटा है उसको कन्वर्ट करता है वो फिक्स साइज ऑफ आउटपुट में यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिथम नोन एज हैश फंक्शन। द रिजल्टिंग स्ट्रिंग इज आल्सो दिस रिजल्टिंग स्ट्रिंग कैन कॉल्ड एज हैश वैल्यू और हैश कोड। जो आउटपुट मिलता है हमें एक फिक्स साइज स्ट्रिंग उसको हम हैश कोड भी बोल सकते हैं, फिर हैश वैल्यू बोल सकते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ हैशिंग इज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा सिंग। सो नाउ लेट्स सी द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैशिंग। इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है इट इज डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक कैसे, गिवन द सेम इनपुट, गिविंग द सेम इनपुट हैश फंक्शंस ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अगर मैंने अक्षय पास किया तो वो सेम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा हैश। अगर मैंने कुछ अक्षय कुरेकर पास किया तो अलग नाम प्रोड्यूस, वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। अगर मैं सेम चीज 10 बार भी रिपीटेटिवली एक एल्गोरिथम सेम एल्गोरिथम में पास कर रहा हूँ तो वो सेम ही स्ट्रिंग जनरेट करेगा। सो दैट वी कॉल्ड एज द डिटर्मिनिस्टिक नेचर। दिस प्रॉपर्टी ensures the consistency and reproducibility of the data. One way function, वन वे फंक्शन इन द सेंस हैशिंग कैन बी डन बाय वन वे। मतलब जो मेरा इनिशियल डेटा था, जो मेरा इनिशियल डेटा होता है उसी को मैं कन्वर्ट करके एक फिक्स साइज आउटपुट जनरेट करता हूँ विच वी कॉल्ड एज हैश कोड और हैश वैल्यू। मैं हैश वैल्यू को वापस में इनिशियल डेटा में जनरेट नहीं कर सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वी कॉल्ड एज अ वन वे। हम उसको एक ही डायरेक्शन में हैश करते हैं। इट इज कंप्यूटेशनली infeasible to reverse engineer the original input from the hash value. This property ensures that the original data remains private and secure. The same thing what I have just explained. Fixed size output. Yeah. Hash produces a fixed length output regardless of the size of input data. जैसे मैंने बताया आप उसका प्यारा दो या you will give the 1,000 line of code, 1,000 line of not code, 1,000 line of words to that particular algorithm, it will generate the same size of data. Yeah. This allows for efficient storage and comparison of the hash values. Collision resistance. Now it is collision resistance as well. Collision resistance मतलब I will explain. जैसे एक एनक्रिप्शन का एग्जांपल लेते हैं। मैं किसी एग्जांपल को एनक्रिप्ट कर रहा हूँ और लेट्स से आई हैव हाय देयर हाउ आर यू डूइंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। इसको मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो वो एक मेरे को 256 बिट का हैश जनरेट करके दे रहा है। और आई हैव अनदर स्ट्रिंग हाय माई सेल्फ अक्षय कुरेकर, और ये स्ट्रिंग भी मेरे को सेम, अगर सेम दोनों का आउटपुट अगर मुझे सेम मिल रहा है इसका मतलब क्या है, वो कोलिजन हो गया। दो अलग अलग स्ट्रिंग के लिए मेरे को सेम आउटपुट मिल रहा है, दैट वी कॉल कोलिजन इन टर्म्स ऑफ cryptography. So let's read the statement here. Collision resistance. A good hash function should make it highly improbable for two different inputs to produce the same hash values. दो different input को वो same hash value produce नहीं करना चाहिए. While collisions are theoretically possible, they should be extremely rare. Hashing में possible हो सकता है but वो extremely rare है. ठीक है. So now let's check the hashing algorithm with respect to the workflow diagram. यहाँ पे मेरा प्लेन टेक्स्ट रहेगा, एनी मैसेज उसको हम डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू पास कर सकते हैं एंड देन इट विल गोइंग टू जनरेट द डाइजेस्ट हैश टेक्स्ट और फिक्स्ड हैश।
This is the simple, but the key part is this hash algorithms. This hash algorithms contains so many different types of logic and different algorithms to generate different types of hash and to provide more security under it. Applications of hash. एप्लीकेशन क्या है इसका? सबसे पहला एप्लीकेशन है डेटा इंटीग्रिटी. Data integrity कैसे? Hashing is commonly used to ensure that data integrity of data during transmission or storage by computing the hash value of the data before and after the transmission. One can compare the two values to check if any changes or error occur. Okay, now I'll explain you what does it mean. यहाँ पे क्या बोला है? हमें हमें पता चल गया हैशिंग क्या है. हैशिंग क्या कर रहा है? एक इनपुट साइज को हमेशा फिक्स्ड आउटपुट में जनरेट कर रहा है. ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन मैंने एक डेटा, मेरे को रिसिपिएंट को कुछ डेटा सेंड करना है, तो मैंने पहले उसका हैश कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है. और मैंने क्या किया, डेटा सेंड किया, मैंने डेटा सेंड किया रिसिपिएंट को, और फिर से मैंने एक हैश कैलकुलेट किया रिसीव होने के बाद में. अगर मेरा पहले का हैश और रिसीव होने का हैश अगर सेम रहा तो क्या हो सकेगा, डेटा ट्रांसमिशन जो था मेरा उसके अंदर कुछ बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन का जो डेटा अगर सेम रहा तो वो एरर नहीं है उसमें, इट इज़ द सेम, डेटा मैनिपुलेट नहीं है. अगर उसमें कुछ भी एरर रहा, वो दोनों हैश अगर मैच नहीं हुए, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा डेटा कहीं तो बीच में मैनिपुलेट हो गया. दैट्स व्हाई इट्स जनरेटेड डिफरेंट हैश. Cool. So it will be, we call it as data integrity. Password storage. Instead of storing password in plain text, systems often store the password values of store the hash values of passwords, where a user enters their password and the system computes the hash value and compare it with the stored hash value for authentication. This adds an extra layer of security, as original password remains unknown even if hash values is compromised. Getting? Yes. इन पहले क्या होता था, पहले हम प्लेन टेक्स्ट प्लेन पासवर्ड लेते थे, एंड मतलब बहुत साल पहले जब वेब 2 का दौर था, एंड वेब 2 इज इन बूम एंड वी डोंट हैव मच कॉम्प्लेक्स हैशिंग एल्गोरिथम्स, तो हम क्या करते थे, सिंपली डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करते थे एंड देन वी स्टोर दैट पासवर्ड इन द डेटाबेस. और यूजर कोई पासवर्ड एंटर कर रहा है तो हम सीधा रॉ पासवर्ड को कंपेयर करते थे. लेट्स से मैंने पासवर्ड रखा है akshay@1234, तो मैं उसी सेम को स्टोर करके जब यूजर एंटर कर रहा है akshay@1234, उसको कंपेयर करके अगर सक्सेसफुली है तो उसको अंदर मतलब लॉग इन कराते हैं, नहीं है तो फेल कराते हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली हैशिंग इज ऑफरिंग, you don't have to store your password in a raw format. Instead of that, you have to store your password in hashed format. मतलब जैसे ही कोई फर्स्ट टाइम यूजर साइन अप करता है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी, जब हम पहली बार साइन अप करते हैं उसको प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे ही साइन अप कर रहा है, पासवर्ड लो, पासवर्ड को हैश करो, और हैश पासवर्ड हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे. हैश पासवर्ड हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, फिक्स्ड साइज ऑफ लेंथ, स्टोरेज बचेगा, एंड देन इट विल बी मोर सिक्योर. क्योंकि इवन दो जो कंपनी, उसको भी पता नहीं रहेगा कि इस पर्टिकुलर यूजर ने क्या पासवर्ड यूज किया. सो इवन कंपनी कैन ऑल्सो नॉट, लेट्स से, कैन नॉट स्टॉक इनटू दैट पर्टिकुलर यूजर डेटा, उसकी यूजर प्राइवेसी बनी रहेगी. ओके, एंड अगर वो डेटा हैश कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो इट इज वेरी हार्ड टू रिवर्स द प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस इन द सेंस, हमें पता था कि हैशिंग इज वन वे, हम इनपुट से हैश जनरेट कर सकते हैं, बट हैश से इनपुट जनरेट करना इट्स वेरी ट्रिकी, इट्स नॉट obviously reversible. So this is for password storage. Digital signatures. Hash functions are used in digital signature algorithm to create a unique hash values of a message or document. The hash value is then encrypted with the sender's private key, create a digital signature that can be verified using the sender's public key. This process ensures the integrity and authenticity of the data. This is nothing but the same example what exactly we have seen in digital signature. जो हमें डिजिटल सिग्नेचर में बताया था, देखा था ना, वो सेम चीज़ है यहाँ पे. आओ. Right. Digital signature. Now data retrieval and indexing. Hashing also used in data structure like hash table or hash maps. Yeah, hash map आपको पता होगा. We use multiple data to map with the hash and store the retrieve the data for efficient retrieval of the data. Hash value or key is used to determine the store location or indexing to associate data, enabling fast and lookup and retrieval. टाइप्स ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं.
सबसे पहला है MD5. दिस इज द मोस्ट व्हाट वी कैन से मैसेज डायरेक्ट डाइजेस्ट एल्गोरिदम, जो कि बहुत पुराना एल्गोरिदम है. MD5, most of the users might know this MD5 algorithm. We used to hash any normal data, but it is not secure anymore now. It's literally very vulnerable, and it is no longer recommended for cryptographic applications. Okay, and second one is we have SHA-1, secure hash algorithm 1. SHA-1 is another widely used hash function that produces 160-bit hash value. Like MD5, SH1 is now considered weak and insecure for cryptographic purposes. SHA-256, secure hash algorithm 256. This is the important algorithms, and in most of the blockchain we use this SHA-256 algorithm to encrypt their data. SHA-256 is the member of SHA-2 family, and it's currently one of the most commonly used hash function. It produces 260 uh, 256-bit hash values and offers stronger security than MD5, SHA-1, and SHA MD5 and SHA-1. SHA-250 is widely used in various cryptographic applications, including digital signature and data integrated check. Blake 2. Blake 2 is a cryptographic hash algorithm function. This is also one of the good hashing functions that offers high performance and security. It comes in two variants. Blake 2B, which provides 512 bit hash, which is more, it's almost bigger than this one. It's almost double. I think not almost. It's double of this particular. And Blick S2S, which provides 256-bit hash values. Blake 2 is designed as an alternative to MD5, SHA, and SHA 2 with improved speed and security. Now we will see hashing workflow with SHA 256. हैशिंग वर्कफ्लो SH हैशिंग वर्कफ्लो ऑफ SH256. इसका वर्कफ्लो काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो डेटा है उसको पैडिंग करते हैं. डेटा पैडिंग इन द सेंस वी हैव अ मैसेज को हमें फिक्स साइज में आउटपुट में जनरेट करना होता है. टू जनरेट द फिक्स साइज ऑफ आउटपुट वी नीड अ सर्टन इनपुट पैरामीटर्स. जैसे कि अगर मुझे मान के चलो 256 बिट का डेटा जनरेट करना है, तो मुझे जो डेटा होता है वो एटलीस्ट 512 बिट का लॉन्ग होना चाहिए. उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम वेरी करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेटा पैडिंग करते हैं. वी ऐड जीरोस एंड वंस इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग. ये हो गया. देन वी इनिशियलाइजेस द डिफरेंट वेरिएबल्स. टू implement the hash algorithms to increase the security of the algorithm. जैसे SHA algorithms में we initialize 6 different variables. Then we main loop. The third step is main loop. Main loop में क्या होता है, we have a different encryption methods with multiple rounds. वो हम इसमें apply करते हैं. Then we have a message scheduling. We schedule the message and we do encryption again with the different rounds. एंड राउंड फंक्शंस, इसमें हम ब्लॉक को डिवाइड करते हैं. हर एक जो मेरा डेटा है, लॉन्ग डेटा है, उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं. चंक्स में डिवाइड करके उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं. हर एक मेन लूप में छोटे छोटे चंक्स को मेन लूप में कन्वर्ट किया जाता है. देन उसको मैसेजेस को शेड्यूल किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंशियल, जो भी एनक्रिप्ट हुआ है सीक्वेंस में, उस मैसेज को शेड्यूल करके एंड देन कंप्लीट राउंड फंक्शन उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है. एंड देन वी हैव अ फाइनलाइजेशन स्टेप. After finalizing, we get the one single digit, not single digits. We get the single fixed length of output that we called as a hash, and this is the workflow of SHA-256. Okay, so I hope you enjoy this video. So please subscribe to this particular YouTube channel for more valid content on blockchain. So here we have one more announcement. Now we are going to start the Solidity series. So stay tuned for the next Solidity series, and it would be completely hands-on.
पूरा हैंड्स ऑन होने वाला है, डेप्थ में नॉलेज होने वाला है। सो एंड इट विल बी द लिटिल लॉन्गर सीरीज, काफ़ी बड़ी सीरीज होने वाली है। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, जय हिंद।